अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CSS PMS लर्निंग पॉइंट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करना चाह रही थी और CSS के एग्ज़ाम्स आपको पता है करीब आ गए हैं एंड इट इज़ अ कॉमन टॉपिक पाक US रिलेशन इनटू CSS और PMS। FPSC PPSC एम्स और वन पेपर MCQ के लिहाज से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और इसलिए आज मैं ये एक लेक्चर डिलीवर करना चाह रही हूँ ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको हेल्प करेगा। और इसके 10 पेजेस हैं एंड आई विल गिव इट टू यू इन PDF इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करने है इसको मैं आपकी टेक्निक बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं इसका पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान USA रिलेशन, यानी USA और पाकिस्तान रिलेशन की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो आप लिखेंगे। कुछ मैंने हाइलाइट्स किए हैं, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड पेज पे देखिए जी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं बिडवेलिंग पाक USA रिलेशंस के, जिसमें जनरल है सिक्योरिटी एंड टेररिज्म है एंड इन्फिल्ट्रेशन इनटू कश्मीर एंड इन्फिल्ट्रेशन इनटू अफ़गानिस्तान, ठीक है। डोमेस्टिक टेररिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल प्रोलिफरेशन है एंड डेमोक्रेटाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स है। नारकोटिक्स है, US इंडियन स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और इसके बाद वे फॉरवर्ड कॉन्सलेशन या रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं, जिसमें जनरल है वे फॉरवर्ड, ठीक है। और इसके बाद US फॉरेन पॉलिसी कंपल्शंस वी पाकिस्तान एंड दी जियो स्ट्रेटजी कंपल्शंस है। कंपल्शंस यानी डिटर्मिनेंट्स को कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स फॉर पाकिस्तान क्या है जी? दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अदर डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर रिलेशनशिप हो क्या सकता है जी? वो 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, 1, 2 एंड 3, ये टोटल जो पॉइंट्स है, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रेजल है, ठीक है। पैराडिगम्स है, स्ट्रेटजी उसमें भी ABCDEFGHIJ तक इन्होंने दिया, ठीक है। फिर रिकमेंडेशंस है 9 पेज पे, कुछ रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन है। ये था जी हमारा एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसको आप CSS में अटैम्प्ट करें या PMS में अटैम्प्ट करें, आपके लिए दोनों ही फ़ायदेमंद है। ये प्री 9/11 का हम सॉल्व कर रहे हैं, पोस्ट 9/11 का भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और चले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वन कैन स्टडी दिस। जी, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे जैसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड उसके अलावा क्योंकि हम आपको ऐसे नोट्स दे रहे हैं जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ी पे करके हासिल किए हैं और ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट नोट्स लगा लें आपको इन पेपर्स में काफ़ी हेल्प रहेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि जी एक पाकिस्तान और को यानी कि US से इंटरेस्ट के लिए एक स्टेबल पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। 9/11 की जो वार थी, आफ्टर 9/11 2 स्टेट्स केम क्लोजर टू ईच अदर, यानी कि जो 9/11 की वार हुई थी उसके बाद 2 जो स्टेट्स थी वो आप क्लोज आ गई थी एंड अदर ईच अदर बिकॉज ऑफ बोथ कंट्रीज जॉइंट एफर्ट्स अगेंस्ट वार ऑन टेररिज्म, क्योंकि ये 9/11 को वार ऑन टेररिज्म भी कहा जाता है।
democratization and human rights protection. I hope आपको समझ आ रहा होगा. To create this stability in South Asia by normalizing the relations between Pakistan and India since military support of US. But this time, since September 2001, Pakistan is fighting with US on a terrorism war with economic and military support of US. जब पाकिस्तान जो है 2001 में आपको पता है वॉर ऑफ टेररिज्म हुई थी, ठीक है. और बट दिस टाइम एड कॉज द लॉस टू पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ बीइंग लाई unlike Pakistan involvement to contain Soviet in 1979 में जो सोवियत की वार हुई थी उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर गोइंग स्मूथली टिल 2011 तक पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे थे. although constant demand of Washington to do more, लेकिन जो वाशिंगटन था पाकिस्तान वो यूएस का कैपिटल वो ज़्यादा चाहता था. बट रिप्स रिलेशंस अबाउट इन 2011, लेकिन जो है थोड़ा सा गड़बड़ सी होगी 2011 में बिकॉज ऑफ रेमन डेविड इवेंट Osama killing in Hyderabad. ये कुछ बचे हैं रेमन डेविड के, ये भी आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा. Osama killing हैदराबाद में जो हुआ था, Osama bin Laden later attacked Malala at the coast and at last liberation of Shamsi Airways by US. Although many friends and relations, but both these countries cannot isolate because of war of terrorism. They must be possible without their mutual cooperation and this war will join to continue. अच्छा, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इससे आपको क्लियर होता है. इसके बाद इंट्रोडक्शन के लिए हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो लिखा जाएगा. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पोर्टेंस बता दी है कि 9/11 पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन कैसे ज़रूरी है, क्या उसकी वजूहत है कि वो इतना एक दूसरे से अटैच हैं, या कौन सी ऐसी बड़ी वजह है कि कैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान, इसलिए यूएसए को ज़रूरत है पाकिस्तान की, ठीक है. उसके अलावा कोई कौन सी ऐसी बातें होंगी क्योंकि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन थोड़ी सी रिफ्ट्स आ गए थे, तो वो कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से थोड़े से गड़बड़ हो गई थी पाकिस्तान और यूएसए की. लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन के बारे में कि मैंने रिकमेंडेशन की है कि बहुत ही अगर पाकिस्तान और यूएसए में रिफ्ट्स आ भी गई हैं, लेकिन अगर ये कंट्रीज एक दूसरे से अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि ये जब तक म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगी तो ये वार ख़त्म नहीं हो पाएगी, ठीक है. जिस अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान की हेल्प बहुत ज़रूरी है, ठीक है. यूएसए और अफगानिस्तान का जो रिलेशंस हैं, ठीक है. उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूएसए रिलेशन. अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है जिसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ. थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना. In order to proceed with the US diplomacy after 9/11, there is need to go to the depth of ups and downs of past 60 years in US-Pak relations. After Pakistan's creation in 1947, its security and economic concerns diverted Pakistan to US bloc. क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमने इनके अच्छे रिलेशन चेक करने हैं तो हमें 60 ईयर्स पहले जाना चाहिए जब 1947 से स्टार्ट हुए थे. सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न थे, ठीक है, पाकिस्तान के. टू कंटेन द सोवियत एक्सपेंशन इन यूएस एशिया एंड काउंटर चाइना influence US needed friends in this region in 1950 to provide security to new-born country. Pakistan get the membership of SEATO. पाकिस्तान ने मेंबरशिप ली सीटो की 1954 में एंड सेंटो in September 1955 respectively. A mutual aid treaty was signed between the two countries in May 1954. Through these treaties imposed domestic constraints on Pakistan. At that time, Pakistan's interest was in security, and US thought that Pakistan is beneficial to it because of its strategic
location. There was threat of expansion of communist in Middle East and Southeast Asia. ठीक है, अब ये कुछ है ना थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बता दी है कि भी पाकिस्तान को थ्रेट था और क्योंकि न्यू बॉर्न कंट्री था पाकिस्तान, इसलिए उसने सीटो और सेंटर की मेंबरशिप ली 1954 में 1955 में। ठीक है, और इसके अलावा है जी ऑन द नॉर्थन साइड पाकिस्तान को हैम्पर दी सोवियत इन्वॉल्वमेंट in Middle East region, and on western side Pakistan could provide protection from Soviet communism in Southeast Asia. Pakistan was no most allied ally for US against the Soviet expansion in 1950s. US chose Pakistan in the region because India's choice of non-alignment. अच्छा, पाकिस्तान को इसलिए चूज़ किया गया कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट शो की थी और पाकिस्तान ने अलाइनमेंट शो कर दी थी। यूएस और सोवियत के जो इनकी वार थी अगेंस्ट 1979 में, Pakistan also got advantages from USA. Pakistan ties. Pakistan got military assistance of पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस मिली थी यूएसए की तरफ से $1.2 बिलियन to $1.5 billion from US, while in other form of agriculture commodities. अच्छा, कुछ कमोडिटीज़ में टेक्निकल असिस्टेंस भी मिली थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट grants from 1947 to 30 June 1965 was nearly 30 जून 1965 तक पाकिस्तान को जो ग्रांट्स मिल चुकी थी इन वो यूएसए से, तो वो थी $3 बिलियन और यानी कि पाकिस्तान मकरूज़ हो चुका था। ठीक है, बट ये मकरूज़ नहीं होता, ये एड दी गई थी। ऑन वन साइड यूएसए गॉट इकोनॉमिक लॉस इन कोल्ड वार ऑफ 1950s बाय प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ एड टू पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को जब एड दे दी तो फिर यूएसए के भी जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ख़राब हो गए, बट पाकिस्तान आल्सो सफ़र ड्यू टू joining US sponsored alliances. In August 1953, a joint communique was issued by Prime Ministers of India and Pakistan that an impartial plebiscite should be settled regarding Kashmir issue, and plebiscite administrator would be appointed by end of April 1954. Nehru in December 1953 warned the Pakistan that if any military aid had come to Pakistan through alliances, then joint communique of 1953 would not be implemented. अच्छा, 1953 में पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा कश्मीर इशू के लिहाज से प्लेबिसाइड के लिहाज से एक अपॉइंटमेंट समझ लें हुई थी। ठीक है, 1954 एंड पे, लेकिन इंडिया ने ये शर्त रखी थी कि अगर वो अलाइंसेस यानी यूएस से कोई भी एड लेगा, जिस तरह कि 3 बिलियन तक एड वो ले चुका था पाकिस्तान, तो वो फिर इस इशू के ऊपर, कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान से कोई प्लेबिसाइड नहीं करेगा। इन 1957 सोवियत यूनियन जॉइंट हैंड्स विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोवियत निकिता क्रुश्चेव वीटोड। ठीक है, वीटो कर दिया था जी सोवियत यूनियन की जो हैं प्राइम मिनिस्टर इशू। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी निकिता, उन्होंने वीटो कर दिया एवरी यूएनओ रेजोल्यूशन दैट वाज अपोज्ड बाय इंडिया। कोई भी जो रेजोल्यूशन इंडिया के बारे में थी उन्होंने वीटो कर दी थी। दे आर वर्ल्ड also refused his support over Kashmir issue because of Pakistan grooming ties with Western powers, were the US achieved by close ties with Pakistan, according to some observers, was exerting the moderating influence through the West Pakistan over anti-Western and extreme nationalist states. In 1960s, Pakistan-USA relations took a new turn because of October 1962 border war between India and China. Pakistan sided with China, and USA supported India with full military equipment. यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत दुख हुआ था क्योंकि पाकिस्तान जो था वो चाइना के साथ स्टैंड कर गया था। इंडिया जो है वो
चाइना के साथ उसके रिलेशन ख़राब थे, इसलिए अमेरिका ने जो है वो इंडिया का साथ दिया था। ठीक है, negotiated between two countries in 1916 and in September 1964। ठीक है, जो दोनों कंट्रीज़ थे यूएस और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी फिर मसले शुरू हो गए थे। ठीक है, और सेनेटर हम्फ्री declared that USA must realize the importance of India in Asian coalition of power in fighting against communism in Southeast Asia. During 1965 war between India and Pakistan, the USA remained very careful, and when Pakistan asked for military assistance, then US Secretary of State Dean Rusk refused bluntly. During war, President Ayub Khan requested President Johnson for permanent ceasefire between India and Pakistan, and ceasefire was at last brought under United Nations Security Council resolution on 25 September 1965। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हुआ था कि जब इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये तीन आपको पता है लाइन्स यहाँ पे हमने ऊपर आगे पढ़ा कि आमने सामने हो गए, तो इंडिया चाइना ने हेल्प की पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो था वो इंडिया के ख़िलाफ़ था, और इंडिया और यूएसए जो था, यूएसए ये आपस में मिल गए थे, जिसकी वजह से जब इंडिया यूएसए यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन थे, ये आपस में जब मिले तो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस थोड़े से ख़राब हो गए। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने दोबारा 1965 की वार हुई, तो पाकिस्तान ने यूएसए से हेल्प मांगना चाहिए, और पाकिस्तान का जो वहाँ पे थे यूएसए के सेक्रेटरी डीन रस्ट, उन्होंने वो उस हेल्प से रिफ्यूज़ कर दिया ब्लंटली। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट जॉनसन से कि वो परमानेंट सीज़ फायर कर दें इंडिया और पाकिस्तान की वार की, but and ceasefire was at last brought under यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन on, लेकिन सीज़ फायर हुआ था यूएन के थ्रू। ठीक है, 25 September 1965। The relations took a positive turn when Pakistan helped US in opening embassy in Beijing in 1970 to 1970। रिलेशंस पे दोबारा से बहाल हो गए। In 1971 वार USA supported India against Pakistan and used India against China। अच्छा, at last Pakistan cut her seat and central membership in 1972 and 1979 respectively। पाकिस्तानी सीटों जो है 1974 में कट ऑफ कर दी, एंड सेंटर की मेंबरशिप 1979 में। आफ्टर 6-7 years the relationship was strained between the two countries when US embassy and several information centers were burnt in bomb blast। ठीक है, जब यूएसए की एम्बेसी और दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह सब कुछ जल गया, फिर से थोड़े से तनाव खींचा गया पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन। इन 1971 9 कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन imposed sanctions on Pakistan because of Pakistan nuclear program development। ठीक है, उन्होंने समझा कि पाकिस्तान ने किया, इसलिए थोड़ा से sanctions पाकिस्तान पे imposed की। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन was against भुट्टो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इस इनिशिएटिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। भुट्टो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया था, इसलिए कार्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो न्यूक्लियर भुट्टो के खिलाफ हो गया। इट वाज सेड दैट देयर वाज आल्सो यूएसए role behind military takeover, and Bhutto was overthrown in July of its strategic position. Pakistan was the only way for USA to contain Soviet involvement in Afghanistan, and that's why Zia military rule stayed in Pakistan for 11 years. Pakistan became a partner of in proxy war USA against Afghanistan। पाकिस्तान जो proxy war था, ठीक है, यूएसए और अफ़गानिस्तान के दरमियान। In 1981 Congress authorized $3 billion aid to Pakistan for 5 years, including 40 F-16 aircrafts, and pledged to provide $4 billion for the assistance in next 5 years। ये 3 बिलियन तो मिल गया था, लेकिन जो नेक्स्ट 5 ईयर में 4 बिलियन मिला था वो नहीं मिला। बट पाकिस्तान वुड बी अ चैनल फॉर प्रोवाइडिंग एड टू मुजाहिदीन फाइट
जी, तो इसके अलावा हम ये जो पढ़ रहे थे, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और ये इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री आई थिंक इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट उसके हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपको मैं लिख दूँगी, इनके PDF में डाल दूँगी, आप उसमें से ले सकते हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में देखें जी, जनरल चैलेंजेस है, इसमें US पॉलिसी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान encompass a wide range of issues including counter-terrorism, religious extremism, nuclear weapons and missile proliferation था, ठीक है। साउथ एशियन regional stability, democratization and human rights, economic reform and efforts to counter narcotics trafficking. These concerns have been affected by several developments in recent years, including proliferation and democracy-related sanctions, a Pakistan-India conflict or Kashmir-India continuing bilateral nuclear standoff, and the September 2001 terrorist attack against the US or revelations that Pakistan has been a source of armored nuclear proliferation to North Korea, Iran. ठीक है, ये यहाँ के कुछ इश्यूज वो जनरल बताए हैं। आगे सिक्योरिटी एंड टेररिज्म का इशू वो इस तरह से है जी। आफ्टर 9/11 terrorist attacks on US, Pakistan became a reliable ally for US in the war on terrorism. Pakistan started banned on so many groups in their premises like Lashkar-e-Taiba and Lashkar-e-Jhangvi and stopped them with using power. Pivotal Al-Qaeda related arrests in Pakistan have included Abu Zubaydah and March 2002 Ramzi bin al-Shibli. ये कुछ नेम्स हैं, ठीक है। Infiltration into Kashmir. Infiltration in इन्होंने से की थी। Islamabad has been under continuous pressure from the United States and numerous other governments to terminate the alleged infiltration of insurgents across the Kashmiri line of control. यानी कि जोसेफ की लाइन से 2004 के न्यूज़पेपर में लगा लें, ठीक है। A vivid example of a vital national interest of Pakistan being rendered hostile treatment by our allies. Infiltration into Afghanistan किस तरह से की थी जी। A more recent development is the alleged increased infiltration of terrorism and their supporters across the Afghanistan Pakistan border. I want to establish parameters of the relationship between the two countries. One, we want friends. Two, we want trade and business. These I want a civilized relationship with Pakistan which avoids acts of aggression against Afghanistan and support for extremism. ये आप स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें डोमेस्टिक टेररिज्म बताया गया थी। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सफ़र फ्रॉम दिस कैंसर एट होम in the US. These attacks, often victimizing foreigners and religious minorities, are viewed as expressions of militants' anger with President Musharraf's regime for its cooperation with the United States. Religious extremism and anti-American sentiment था, उसमें क्या था जी। US has always been wary of the Islamic identity of Pakistan. The war issue boiled within Pakistan during General Zia's era, but it served the American interest at that time. Thereafter, religious extremism in Pakistan has been viewed by the US US as the cause of spread of terrorism around the world. These western provinces border Afghanistan, which led to the fear of their Talibanization of Pakistan in the American circle.
तालिबान के लिहाज से भी आप यहाँ पे करंट अफेयर का सेटल कर सकते हैं कुछ डॉन से पकड़ के, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन और अच्छा होगा। न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल प्रोफेशन है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, ऑल्दो द डिमांड फॉर वेस्टर्न democratization of Pakistan is always on the agenda and is watched as a source of concern. It is being played in the background with visible US support to the present Pakistani setup for all to see. It serves the sport purpose of both presently yet again when there is a divergence of interest, ठीक है। नार्कोटिक्स में बता रहे जी, पाकिस्तान इज़ अ मेजर ट्रांजिट कंट्री ऑफ अफेयर्स यानी अफीम दैट आर ग्रोन एंड प्रोसेस्ड इन अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान में नार्कोटिक्स ज़्यादा बनाई जाती है, इसलिए तो पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म ये कि कहा जाता है कि टेररिस्ट कंट्री है। अफ़गानिस्तान में अफीम वगैरह खुद नार्कोटिक्स पैदा करता है। द रीजन हैज़ इन द पास्ट supplied up to 40% of heroin consumed in the United States and has been second only to Southeast Asia's Golden Triangle as a top source of the world's heroin. उसके अलावा US Indian strategic relations, Pakistan has seen its external security environments become increasingly जी। तो उसके अलावा हम ये जो पढ़ रहे थे ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और ये इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री आई थिंक इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट वन उसके हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपको मैं लिख दूँगी, इनके PDF में डाल दूँगी, आप उसमें से ले सकते हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में देखें जी, जनरल चैलेंजेस है, इसमें US पॉलिसी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान encompass a wide range of issues including counter-terrorism, religious extremism, nuclear weapons and missile proliferation था, ठीक है। साउथ एशियन regional stability, democratization and human rights, economic reform and efforts to counter narcotics trafficking. These concerns have been affected by several developments in recent years, including proliferation and democracy-related sanctions, a Pakistan-India conflict over Kashmir, India continuing bilateral nuclear standoff, and the September 2001 terrorist attack against the US or revelations that Pakistan has been a source of onward nuclear proliferation to North Korea, Iran, ठीक है। ये यहाँ के कुछ इश्यूज वो जनरल बताए हैं। आगे सिक्योरिटी एंड टेररिज्म का इशू वो इस तरह से है जी, आफ्टर 9/11 terrorist attacks on US, Pakistan became a reliable ally for US in the war on terrorism. Pakistan started ban on so many groups in their premises like Lashkar-e-Taiba and Lashkar-e-Jhangvi and stopped them with using power. Pivotal Al-Qaeda related arrests in Pakistan have included Abu Zubaydah and March 2002 Ramzi bin al-Shibli, ये कुछ नेम्स हैं, ठीक है। Infiltration into Kashmir. Infiltration in Kansi Kitib, Islamabad has been under continuous pressure from the United States and numerous other governments to terminate the alleged infiltration of insurgents across the Kashmiri line of control, यानी कि जोसेफ की लाइन से 2004 के न्यूज़पेपर में लगा लें, ठीक है। A vivid example of a vital national interest of Pakistan being rendered hostile treatment by our allies. Infiltration into Afghanistan किस तरह से की थी जी? A more recent development is the alleged increased infiltration of terrorism and their supporters across Afghanistan.
Pakistan border, I want to establish parameters of the relationship between the two countries. One, we want friends. Two, we want trade and business. These I want a civilized relationship with Pakistan which avoids acts of aggression against Afghanistan and support for extremism. ये आप स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें डोमेस्टिक टेररिज्म बताया गया। दी पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सफ़र फ्रॉम दिस cancer at home. In the US, these attacks, often victimizing foreigners and religious minorities, are viewed as expressions of militants' anger with President Musharraf's regime for its cooperation with the United States. Religious extremism and anti-American sentiment था, उसमें क्या था जी? US has always been wary of the Islamic identity of Pakistan. The issue boiled within Pakistan during General Zia's era, but it served the American interest at that time. Thereafter, religious extremism in Pakistan has been viewed by the US US as the cause of spread of terrorism around the world. These western provinces border Afghanistan, which led to the fear of their Talibanization of Pakistan in the American circle. तालिबान के लिहाज से भी आप यहाँ पे करंट अफेयर का सेटल कर सकते हैं, कुछ डाउन से पकड़ के, ठीक है। उससे आपका क्वेश्चन और अच्छा होगा। न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल प्रिपरेशन है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, ऑल्दो द डिमांड फॉर वेस्टर्न democratization of Pakistan is always on the agenda and is watched as a source of concern. It is being played in the background with visible US support to the present Pakistani setup for all to see. It serves the support purpose of both presently, yet again when there is a divergence of interest, ठीक है। नार्कोटिक्स में बता रहे जी, पाकिस्तान इज़ अ मेजर ट्रांजिट कंट्री ऑफ एड्स यानी अफीम दैट आर ग्रोन एंड प्रोसेस्ड इन अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान में नार्कोटिक्स ज़्यादा बनाई जाती है, इसलिए तो पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म ये कि कहा जाता है कि टेररिस्ट कंट्री है। अफ़गानिस्तान में अफीम वगैरह खुद नार्कोटिक्स पैदा करता है। द रीजन हैज़ इन द पास्ट supplied up to 40% of heroin consumed in the United States and has been second only to Southeast Asia's Golden Triangle as the top source of the world's heroin. उसके अलावा US Indian strategic relations, Pakistan has seen its external security environments become increasingly aggravated as a result of the Indo-US strategic relationship. अच्छा, वो जो दोबारा बिगन हुआ था, यानी कि जो दोबारा शुरू हुआ था इंडो यूएस का रिलेशन, उसको एक मोमेंटम मिला आफ्टर द क्लैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन के बाद एक मोमेंटम मिला विच हैज़ प्रोग्रेस्ड स्टडीली, जिसने बहुत ही तेज़ी से तरक्की की डिस्पाइट इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11. Pakistan's security parameters are being impacted upon by the Indo-US strategic partnership. In this context, the new US security strategy paper of September 2002, and which marks a strategic shift in US security and foreign policy. From the Pakistani perspective, post 9/11, the parameters divided South Asia from the neighboring Asian regions have further weakened, especially with both Pakistan and India becoming part of the international coalition's war on terrorism and the presence of external military forces not only in Indian Ocean, Central Asia, but also in the Indian Ocean. Next है जी, Pak-US relations, the Fay War.
वे फॉरवर्ड यानी इसका सोल्यूशन और रिकमेंड जनरल में देखते हैं जी। वाइल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ कंट्रीज फ्रॉम ईच अदर रिमेन very high and therefore a ripe case for mistrust, there is all the likelihood of continued closeness of relations, at least in the foreseeable future. After all, with George Bush have been re-elected, the White House policy remains unchanged. U.S. foreign policy compulsions via Pakistan, realization of the fragility of preemption. In the 9/11 period of Al-Qaeda killing and Guantanamo Bay-like human rights abuses, that social economic development of societies is also a necessary component of anti-terrorism. To a lesser extent, Washington also realizes that resolution of conflicts also contributes to condition of peace and security. Moving forward on these various fronts, Pakistan have become Washington's key ally. This geostrategic compulsion. Also, Pakistan's geographical location links into it to 4 different regions: South Asia, West Asia, and China and Central Asia, making it the survival around which matters of trade, security, politics, and economic revolve. Compulsions का यानी determinants for Pakistan, उसमें the new world order, any viable policy on future strategy for Pakistan with its relation with the USA must be cognizant of and address the new world order, broad contours of which are enumerated below. The Bush doctrine of preemption, allowing U.S. overseas intervention with or without any world UN support. It's characterized by U.S. hegemony in a unipolar world, stemming out of military and economic muscle, the emergence of the regional center of power, and that of quasi and uprising global players. जो economics is fast overtaking OEO strategy, and that latter is now looked as a function of the former. The determinants of future relationship. The future relationship के क्या determinants हो सकते हैं? 3 फैक्टर उन्होंने हमें दिए. How the contours of Pakistan's relation will shape in the days to come is a moot point. These will comment upon domestic, regional, and global factors. Domestically, how do the internal dynamics in Pakistan unfold in the coming days? In other words, how strong and stable is the present regime, and how effectively is it able to handle the restive, resurgent, and radical elements in the country? How astute is it in handling the economy that exports terrorism? ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए हैं. ठीक है कि उनकी आगे हम पढ़ रहे हैं. कंपल्शंस यानी कुछ डिटर्मिनेंट्स फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में क्या होना चाहिए. रीजनली as to how the ongoing peace process between India and Pakistan unfolds, the US as a facilitator would like to see progress in the regard. It would also monitor the course of our strategic relationship with China and our role in Afghanistan. Globally, how do the US forces ultimately fare in Afghanistan and Iraq? This would be an enormous domestic compulsions on the US and would directly affect its commitment to the war on terror and thus Pakistan. A realistic appraisal इसमें देखते हैं जी. उसमें उन्होंने बताया कि what Pakistan must realize is that the present setup in a marriage of convenience and based neither on ideology nor on a notion of friendship, but as is the case in the international relationship, it is based on convergence of interest. The convergence on interest where convergence and the US interests are the overriding factor. There is no logical fighting reality and no cause for
biased anti-Americanism. The relationship source our interest too, and we would miss yet another opportunity if we were to let this one slip by. Pakistan has to endeavor for a meaningful and constructive engagement with the US. नेक्स्ट है जी पैराडिगम्स ऑफ स्ट्रेटजी इसमें सेल्फ रिलायंस चाहिए कि दिस मस्ट बिकम a steady that vigorously pursued policy objectives. We cannot enjoy dignified sovereignty without standing on our own two feet. What must be understood is that it is not necessary to antagonize others in realization of this aim. Restoration of national and religious pride होना चाहिए. The dealing with the US must not be viewed as a compromise on our sovereignty. National dignity must be guarded, and a positive perception to this effect to be created both internally and in the international community. On Islamic identity and character be portrayed as a source of strength and understanding sought from the US to the effect. इसका inner front होना चाहिए. Must present a cohesive inner front to the US. If anything, the foreign elements, including the America, should be dissuaded from interfering with and aggravating our internal problems. The religious extremism and card can be played to own advantages in this regard. ठीक है. नेक्स्ट है जी रिकमेंडेशन रिलेशनशिप विद चाइना कि चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशन होने चाहिए. इंडिया फैक्टर और वार ऑन टेरर एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होना चाहिए. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होना चाहिए. मीडिया बर्ड्स होना चाहिए. इकॉनमी एंड ट्रेड होना चाहिए. एंड रिकमेंडेशंस देख रहे. रिकमेंडेशंस में हम मेन पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. Addressing immediate energy, water and related economic crisis through short-term humanitarian assistance, improving local police forces in counter-terrorism and technical fields, controlling narcotics and drugs in the tribal areas of Afghanistan and Pakistan, since these are the biggest source of income for extremists to purchase weapons and other material, controlling opium and poppy cultivation in the Pak Afghan region. ये recommend कर रहे हैं हम. ठीक है. Constituencies which could offer a means to enhance US-Pakistan cooperation at the sub-national level, reforming the number 6 reforming the existing education structure in rural and urban areas with the help of provincial governments to counter anti. और इसके अलावा उन्होंने 5th पे देखी reaching out to different political parties including those with limited regional constituencies which could offer a means to enhance US-Pakistan cooperation at the subnational level, reforming the existing educational structure in rural and urban areas होनी चाहिए with the help of provincial governments to counter anti-US sentiments among younger population, effectively preventing militant groups from capitalizing on their vulnerabilities. अच्छा 7th देखिए stabilizing Afghanistan through peace talks and agreements with the Pashtun tribal leaders and with the Taliban who are willing to come to the negotiating table. 8th पे देखें developing the tribal areas on both sides of Pakistan-Afghanistan border so that insurgents are unable to find sanctuaries and sport bases. 9th पे देखें addressing the Kashmir issues by getting India and Pakistan to negotiate. The US should encourage changes in the dynamics of the Indo-Pakistan relationship to reduce tension on both sides. 10 है जी providing better salaries and specialized counter-terrorism training to the Pakistan police force. 11th है broadening the anti-militant campaign nationwide, especially in rural areas of Punjab and in the Afghan-Pakistan border region.
कंक्लूजन भी हम सारा पढ़ेंगे ताकि इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स आप ले सकें. Pakistan is going through a long drawn out internal crisis. A coalition government struggling with the difficult situation inherited from the previous regime is facing uncertain relations with its neighbors as well as with its allies in the war on terror. It confronts issues of rampant inflation, increased terrorist activity nationwide, and a dire energy shortage. Dramatic reforms are needed in almost every sector to restore economic and political stability. Pakistan is also concerned about Indian penetration in Afghanistan. Being a strategic partner, the US should take responsibility for restraining India's activity, especially in areas close to the Pakistan-Afghanistan border. With its crucial position in South Asia, its long-running enmity with India and its border with Afghanistan, any threat of potential failure in Pakistan represents the greatest strategic threat facing the current international system. There is an urgent need for broader dialogue between Pakistan and the US at the strategic, political, diplomatic, and economic levels. Constructive and productive opportunities should be created to cultivate the relationship and improve the image of the US as a reliable ally. America needs Pakistan in order to fight and defeat its enemies, but Pakistan, being a frontline ally, has already suffered heavy losses. It is necessary for the US to assure its commitment to the Pakistani society, civil bureaucratic leadership, and the army, and ensure that this time the relationship is going to last. Washington has, since the events of SK related to events in and around Afghanistan under the pretext of Islamist extremist and anti-West terrorism. This fails to assess the relevance of this situation according to regional dynamics and thus in shaping an appropriate responses. The rise of insurgencies in Afghanistan and a politically weak and corrupt government have left political and psychological scars on the country. The West needs to remember that the Taliban and Al-Qaeda were joint products which the US and Pakistan produced to counter the Soviet Union in the 1990s. The path ahead must be multi-pronged to deal with the challenges at hand. Both Pakistan and the US should design assistance program on military as well as civilian platforms to empower the relationship, overcome the trust deficit, and eliminate anti-American perception. This is essential to reach goals that are broadly compatible with the interests of both countries and enable them to defeat a common enemy. सो गाइस ये था हमारा वो क्वेश्चन जो कि हमने डिटेल से स्टडी किया. आई होप आपको समझ क्लास में आई होगी. अगर कोई आपको क्वेश्चन जो है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. एंड दिस इज़ द पाक US relationship in the CSS PMS Learning Point channel. This is your own channel. You can anytime comment, but in the sense of respective manner, because we are just for you, for your assistance in the education. I hope you like this and don't forget to subscribe this. Thank you so much. Allah Hafiz.